नमस्कार। असीम आर्यावर्त में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज कुछ अलग करते हैं। एक वीडियो है जो मेरे सामने निकल के सामने आई है, वैल्यूटेनमेंट इस चैनल का नाम है। काफ़ी फेमस चैनल है और इसमें पैट्रिक वेट डेविड जो उस चैनल के संस्थापक हैं और होस्ट भी हैं, उनकी तरफ से ये एक सब्जेक्ट लाया गया है। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भारत के बारे में है या भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, उनके बारे में है। तो आप जानते ही हैं कि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो चुका है कि किस तरह से भारतीय लोग बाहर जाके सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। फिर चाहे वो विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बनना या फिर वहाँ के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना, इवन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनना, ये सारा कुछ अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी बात उसी तरह की गई है कि भारतीय मूल के जो लोग हैं अमेरिका में, वो मात्र 1% हैं पूरे अमेरिका के पॉपुलेशन में, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। मैं पूरे फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, सब की, पूरी इंडियन कम्युनिटी की। तो चलिए हम इसमें आगे हम देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करने से ज़्यादा जो है फोकस मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है यूट्यूब के एल्गोरिदम में। तो ये ज़रूर करें आप। चलिए ये वीडियो देखते हैं। So why is it that Indian immigrants from India, the country, and the ethnic group of Indians in America are crushing every other ethnic group in America, not by 5%, not by 10%, by 20% in income? We have stats on their divorce rates against everybody else. We have stats on how they raise their kids. We have stats on how they put their kids in certain majors over other majors. It's just mind-boggling, and everybody else is going to learn a ton about how Indians raise their kids. Alright, so if you get value from this video, give it a thumbs up and subscribe to the channel. Let's get right into it. Income is one of the ways to measure who's more successful than others, okay? This is according to the US Census Bureau, where Indian Americans rank amongst other ethnic groups. If you look at this chart here, this is 2018. Indians all the way at the top at $120,000 income. Taiwanese is number 2. They're ahead of them by nearly 25%, 24%. Chinese. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक लिस्ट है जो अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा स्टैटिस्टिक दिया गया है, जिसमें भारतीय मूल के जो इनकम है वो लगभग $1,20,000 के आसपास है। और वाइट अमेरिकन जो लोकल माने जाते हैं उनका $64,000-65,000 के आसपास है। अब यहाँ पे एक बात इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका की अपनी मीडियन इनकम जो है, जो GDP पर कैपिटा मानी जाती है, कही जाती है, वो $64,000 के आसपास है। ये दुनिया के रिचेस्ट कंट्री में आता है, क्योंकि अगर कंपेयर करें भारत के साथ तो भारत की मीडियन इनकम यानी पर कैपिटा GDP वो लगभग $2,000 के आसपास आती है। और जो चाइना है वो इतना ज़्यादा डेवलप कर चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ के मीडियन इनकम वो $10,000 के आसपास आती है। तो 6 टाइम्स जो है वो अमेरिका की मीडियन इनकम है चाइना के अगेंस्ट। तो इसीलिए अमेरिका को रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। अब ये लिस्ट में जो है वो आपको रिलीजियस वाइज तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हिंदू कम्युनिटी और किसी लिस्ट में और किसी सर्वे में ये बात भी प्रूव हो चुकी है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो अमेरिका की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कम्युनिटी मानी जाती है। उसके बाद ज्यूइश कम्युनिटी आती है और फिर बाकी और सारे जितने रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो भी आते हैं। तो दोनों लिहाज से, चाहे वो इंडियन मूल के लोग, भारतीय मूल के लोग हो या हिंदू कम्युनिटी है, उन दोनों में सक्सेसेस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऑन टॉप ऑफ द अमेरिकन चार्ट्स हमें नज़र आते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है। Third, Japanese fourth, and is Pakistani, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Hmong, and then Vietnamese. And look where white Americans are at $65,000. Indians make $55,000 per year than white Americans. By the way, white Americans, you're trying to go to 4 days a week work week. Try convincing an immigrant coming from India, Taiwan, China, Japan, Pakistan, Filipino, Indonesian, Korean, Cambodian, Persian, Hmong, Vietnamese, trying to convince them to only work 4 days a week. Not their kids who are born here maybe,
and they're being Americanized, try convincing an immigrant to only work 4 days a week. They will laugh at you. The whole purpose of coming to America is that they can work as much as they want. It's called free enterprise. But let's kind of take a deep dive with some of these other stats. यहाँ पे ये बता दूं कि ये जनरल एक परसेप्शन है वेस्ट में हो गया है कि अब चाहे वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो तो अब प्रोग्रेसिव उनका जो वैल्यू है वो ज़्यादा उस पर एम्फेसिस दिया जाता है। तो इस वजह से 4 डेज़ वर्क का वहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है या डिमांड चल रही है। ईस्टर्न देशों में चाहे वो जापान भी हो चाहे चाइना और भारत जैसे देशों में यहाँ पे है क्या कि आपका 6 डेज़ पर वीक का जॉब आवर हुआ करता था, वर्क आवर हुआ करता था। अब 5 डेज़ पर वीक का वर्क आवर हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग 6 डेज़ पर वीक का वर्क आवर देखने को ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी मिल रहा है, ओवर टाइम जिसको कहते हैं। तो ये एक वर्क एथिक वाली बात है। भारत और जो ईस्टर्न देश हैं वो ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं वेस्टर्न देशों के अगेंस्ट अगर कंपेयर किया जाए तो ये एक डिफरेंस है। Indian population living in poverty amongst percentage-wise with Americans. All Americans, roughly 13% of Americans live in poverty. All Asians, it's 10%. Look at Indians. Only 6% of all Indians in America live in poverty. Now, let's look at education. What percentage of them have bachelor's degrees? ये भी एक देखने वाली बात है कि मात्र 6% जो है वो भारतीय जो है भारतीय मूल के, चाहे वो अगर अमेरिका में भी जन्मे हों तो वो 7% है, बाहर से गए हों तो वो भी 6% है। तो बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी में। अमेरिकन भारतीयों की बात कर रहा हूँ, अगर कंपेयर किया जाए तो बाकी जो एशियंस हैं वो 10%, 9%, 11% के उसमें आते हैं, US बॉर्न, फॉरेन बॉर्न, और जो लोकल अमेरिकन्स है वो 13%, 14% में आते हैं। तो अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो भारतीय मूल के जो है उसमें गरीबी कम है। और ऐसा भी कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि आप किसी भारतीय को होमलेस नहीं देखेंगे, तो वो भी एक देखने वाली बात है। Poverty. Now, let's look at education. What percentage of them have bachelor's degrees? What percentage of them have masters or MBAs? And what degrees they have? Look at this year. In 2021, 80% of Indian immigrants over 25 years old or older reported having at least a bachelor's degree versus only a third of all foreign-born and U.S.-born adults. Again, 80% versus 33%. 80% of 25 and older have a degree, 4-year degree. 49% of Indian immigrants adults have at least a graduate or professional degree in 2021 compared to 15% of foreign-born and 13% of US-born, nearly 4 times of US-born. तो यहाँ पे ये है कि जो 80% जो भारतीय हैं उनके पास डिग्री है, जो एडल्ट्स हैं वहाँ पे, और उसमें भी लगभग 50% के आसपास उनके पास और हायर डिग्रीज है। मतलब जो ग्रेजुएट हुए और पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट जो भी है वो 50% जो है उनके पास है। और कंपेयर किया जाए तो जो 30 लगभग 1/3 यानी 33% जो है अमेरिकन्स, उनके पास बैचलर्स डिग्री है, और जो हायर स्टडीज़ है वो तो और भी कम है, 15% ही है। तो ये भी यहाँ पे बताया Now, what do they major in? Let's kind of go a little bit deeper into that one. Lots of people waste money on degrees that have no amount of high-paying jobs. Most people agree that you plan on going to college, you need to major in STEM to make it a good investment, but Indian Americans abide by this. It's like a religion. STEM, science, technology, engineering, and math. Look at the... ये तो सही बात है, ये बिल्कुल ही सही बात है। भारत में भी और भारतीय मूल के जो लोग हैं अमेरिका में या वेस्ट में भी कहीं भी रहें तो उनका यही प्रेफरेंस हमेशा से रहा है, इंजीनियरिंग, डॉक्टर या फिर जो साइंस की डिग्रीज़ हैं जो कि प्रोडक्टिव डिग्रीज़ मानी जाती है, उस पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इससे जॉब की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसी फील्ड में आती है। तो इसीलिए भारतीय के मूल के लोग हैं वो बहुत इस तरह के जॉब्स में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 36% इंजीनियरिंग, 35% मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और 10% बिजनेस है। बाकी और जो
और भी डिग्रीज है जैसे ह्यूमैनिटीज़ हैं, सोशल साइंस है, इनमें कम ही लोग जाते हैं भारत मूल के। अब ये अमेरिका में ज़्यादा प्रचलित हो गया ह्यूमैनिटीज़ और हेल्थ प्रोफेशन, सोशल साइंस, इसमें वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा जाते हैं। लेकिन भारतीय मूल के जो लोग हैं, चाहे वो भारत में ही रहे चाहे अमेरिका में रहे, उनका फोकस मेन हमेशा से स्टेम में रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। तो वो हमेशा से यहाँ पे देखने को मिला है। Chart here on what they major in. At the top, you see the blue, engineering 36%. Then it's math and computer science 35%. Then that 10% at the top, you see it? Business management. So they're intentional about what areas they're going to go major in. Now let's go even a little bit deeper than this on how they measure amongst other ethnic groups. This is according to the U.S. Census Bureau. If you look at the top right, you'll see all immigrants. It's a darker blue. You'll see Indian immigrants. It's a lighter blue. And then you'll see U.S. born. Okay. Furthest to the left is management, business, science, art occupations. Look who's in the middle. 79% of Indian immigrants versus 43% of US born versus 37% of all immigrants. They major in management, business, and science. Look at service occupation. They're the lowest at 5%. US is 15% and all the other immigrants 21%. वहाँ के सर्विस ऑक्यूपेशन जो है, पहले भारतीय जो जाते थे तो एक स्टीरियोटाइप हुआ करता था कि वो चाहे तो बड़े बड़े जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उसमें काम करते हों, या फिर जो मोटेल्स हैं उसमें काम करते हों, या फिर जो रिसेप्शन होता है, या फिर जो टैक्सी है, या इवन जो मैकडोनल्ड्स या फास्ट फूड चेन उसमें काम करते हो। लेकिन अब देखने को यही मिलता है कि जो मेजॉरिटी जो है वो बेसिकली वही बिजनेस या इंजीनियरिंग या इस तरह के जो प्रोडक्टिव जॉब्स है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। They're like, no, you're not going to major in service when you go into this. Look at sales and office occupation, 10%, 15%, 21%. National resource constitution maintenance occupation, they're 1%. It's almost as if you do go and major in that, you're going to get a lot of pop-out from your parents there, but it's a 1%, 8% for US born, 12% from all immigrants. Then production, transportation, and material moving, 6, 13, 15. Look, they're not interested in that. You know what they're interested in? Management, business, science is what they're interested in. They want to do STEM. So obviously this leads to them making a lot of money, but let's look at business. Are they startup entrepreneurs? Do they produce billionaires? I don't know. Let's take a look. So here's what it looks like. According to Oxford Academic, Indian immigrants represent 1% of the U.S. population, but 8% of the founders of high-tech companies and 1/3 of technology startups in Silicon Valley. 1% of total U.S. population, 8% of all founders. Here's some of the names of billionaires that produce. Jay Chaudhry, net worth $8.3 billion, CEO of Zscaler. Vinod Khoshla, net worth $5.3 billion, former Sun Microsystem co-founder. Rome Wadhwani, $5.1 billion. Rakesh Ganwal, $4 billion, Indigo CEO, founder. Naresh Shah, CEO of Wayfair, $2.8 billion. Anil Bursi, net worth $2.3 billion, CEO of Workday. This is working on how they're producing and what they're majoring in. Now, तो ये बात इतने ही पे सीमित नहीं रहती है कि तो भारतीय लोग हैं वो सीईओ ही बनते हैं सिर्फ। वहाँ पे अब जो है 1% पॉपुलेशन है, 1% पॉपुलेशन, लेकिन 8% वहाँ के जो कंपनीज हैं उसके फाउंडर भी भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं। जैसे सन माइक्रोसिस्टम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेले उन्होंने कंपनी खोली है, और भी लोग हैं, लेकिन उसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें भारतीय मूल के लोग भी हैं। जैसे सन माइक्रोसिस्टम, आपने जावा का नाम सुना है, इसी कंपनी से आई है जावा जो लैंग्वेज है। और विनोद खोसला उसमें एक वन ऑफ द फाउंडर्स थे, और वो अब बिलियनर्स हैं। और उसके साथ ही जो सिलिकॉन वैली है, जैसे बेंगलोर में आप देख सकते हैं कि कितनी सारी आईटी कंपनीज़ है, वैसे ही जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, उसमें भी 25% जो है नए स्टार्टअप्स वो भारतीय मूल के जो लोग हैं वो वहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे now let's look at family perspective. What do they do that's different when it comes down to the family? Well, one thing that's interesting is it's very common for multiple Indian families to share a home while building a business together and continuously expanding the business. So it's almost like the concept of delayed gratification. Hey, let's live together, let's minimize expenses, let's put all the money we're making back into the business rather than splurging and wasting money all over the place. Couple other things to be thinking about. It is not delayed
ग्रेटिफिकेशंस जनरली होता है कि भारत में है ये संस्कृति ही है, उतनी ज़्यादा खर्च जो है वो हम नहीं करते स्पेंडिंग जो फ्रिवलस चीज़ों पे। जैसे कि हमारा जो एक मेंटालिटी रहता है वो भारत में ही नहीं, और भी जो ईस्टर्न देश है, जैसे मैंने बताया कि ईस्टर्न जो देश हैं एशियन कंट्रीज़, वहाँ पे मेंटालिटी कंजर्वेटिव है। तो इस यहाँ पे अगर आपके पास पैसा है तो आप रियल एस्टेट में लगाते हैं, मेटल खरीदते हैं जैसे गोल्ड सिल्वर, या इस तरह के इन्वेस्टमेंट कहीं जैसे स्टॉक्स शेयर मार्केट है उसमें करते हैं। आप इतना महंगा कार नहीं लेते, खैर अब तो लोग लेते हैं महंगा कार भी, लेकिन वो पहले ये सब कर चुके होते हैं, मतलब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत सारे इस तरह के प्लॉट्स ले लिए, बहुत सारे घर ले लिए, ओनरशिप रहती है। इसको जनरेशनल वेल्थ कहा जाता है। तो आप अपना जनरेशनल वेल्थ फिर ट्रांसफ़र करते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने नेक्स्ट बच्चों को, उनके बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को। तो इस तरह से वेल्थ क्रिएट होता रहता है। लेकिन अगर आप फ्रिवलस चीज़ों पे करोड़ों की कारों पे आप पहले से पैसे स्पेंड कर चुके हैं तो आपके पास बाकी आगे कुछ सेविंग्स रहेगी नहीं। तो ये एक मेंटालिटी भारत में रही है और ये अच्छी मेंटालिटी है। इसलिए कहा जाता है कि 90% जो बड़े बड़े लॉटरी विनर्स हैं वो लगभग 2-3 सालों में ही अपना सारा पैसा खो देते हैं। अब उनके पास सारा पैसा, इतना ज़्यादा पैसा आता भी है, लेकिन उनके पास मैनेजमेंट की कोई स्किल नहीं होती है। वो फ्रिवलस चीज़ों में पैसा वेस्ट कर देते हैं और सारा कुछ खो देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करने की है। When it comes down to divorce rates, did you know Indian Americans have the lowest divorce rates in America? Very interesting, right? Now, some of you are going to say, well, of course they have the lowest divorce rates in America because they have arranged marriages. They may in India, but not necessarily all in America. It does happen, but it's not as high of a number as it is in India, and it's gradually going away. Anyways, well, let's look at the stats here. मुझे नहीं समझ में आता ग्रेजुअली वाई शुड इट गो अवे। आई मीन जो अरेंज मैरिज है, इफ़ डिवोर्स रेट इज़ लो वाई शुड इट गो अवे। आई मीन 50% जो मैरिजेज इन अमेरिका एंड अप इन डिवोर्सेज। तो आपको अरेंज मैरिज से क्या प्रॉब्लम हुआ? तो फिर सारे तो अपने साथी खुद चुनते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा फिर आपको डिवोर्स रेट देखने को क्यों मिलता है? तो ये भी एक देखने वाली बात है। और डिवोर्सेज आर नॉट जोक्स, ये मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्लैक्स अमेरिकन में कितना ज़्यादा डिवोर्स सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। और ब्लैक अमेरिकन्स है वन ऑफ द लोएस्ट, जो उनका कहेंगे प्रिविलेज लिस्ट में आते हैं, या फिर उनकी इनकम जो है वन ऑफ द लोएस्ट अब देखने को मिली है। वो सारे इस तरह के जो सोशल इविल्स हैं, जैसे डिवोर्सेज हैं या फिर इस तरह के जो चीज़ें हैं, उसमें नज़र आती है। इस वजह से इनका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, और इस वजह से उनकी जो पॉवर्टी है वो भी सबसे ज़्यादा अमेरिका में देखने को मिलती है। उसके बाद हिस्पैनिक, उसके बाद वाइट्स, और उसके बाद अदर्स हैं। According to National Center for Family and Marriage Research, blacks, they have the highest divorce rate, 30.8%. Hispanics are 18.5%. Whites are 15.1%. Other is 12.4%. But for Indian families, you ready? There are some studies that say 1.3% and some that show 6%. But they're lower than anybody else when it comes down to this. Obviously, some of it has to do with culture, ritual, all of that, but they have a lower divorce rate than others. Again, this is purely based on statistics. Couple other things. We looked at this website called indiaparenting.com, and we saw these 10 things that they do as parenting that's different than others. Some of it you may say, I had some of that with my parents, or I apply some of it myself, and some of you may say, yeah, we definitely don't do that in America. Here, let me kind of go through it. Number one, they promote kinship. Indian parents make it a point to foster relationships and association with their social and family acquaintances. They edify their children to be in social connections and also maintain healthy connections with their relatives. More so, they stay as shelter beside their children till they are married off, right from the children's infant ages to their marriage times. Even after that, the parents support their youngsters emotionally in order to provide the much needed support. Ideal Indian parents create a social environment where the concept of family is expanded to all. So they're selling family, they're selling kinship, they're selling let's stay close. They're edifying that lifestyle, and the kids are emulating whatever the parent, the leader, edifies. That's what they want to do. Number two, self-sacrifice. And almost every Indian parent sacrifices their lives in some way to devote themselves in raising their kids. Indian mothers forego their dreams and passions. I'm not sure why it is sacrifice. I mean, the primary duty of a parent is to raise their children
to secure their children, to make them a good human, and to see them success in their life. आई डोंट थिंक इट इज़ अ सेक्रीफाइस मतलब क्या है इसमें, आप क्या इसको सेक्रीफाइस कहेंगे? क्योंकि आपका जो एन्जॉयमेंट है, आपका ये सारा कुछ, वो सेक्रीफाइस है, या अपने चिल्ड्रन को आगे बढ़ता, आपकी फैमिली को आगे बढ़ना? इवन डिवोर्स जो है वो बहुत आजकल कॉमन हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ब्रेकिंग ऑफ द फैमिली इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इट इम्पैक्ट्स आपके चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, और ब्रेकिंग फैमिली इज़ नेवर अ गुड थिंग। भारत में भी अब ये बहुत ज़्यादा सिलसिला देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम अमेरिकन या वेस्टर्न मॉडर्निटी को भारत में अब इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सारा कुछ हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमें अमेरिका की सोसाइटी की डिजेनरेसी वो हमें देखने को मिल रही है, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हमें मॉडर्न होना है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोर वैल्यूज़ यानी फैमिली वैल्यूज़ जब भारतीय मूल के पेरेंट्स लेते हैं तो वो ऑन द टॉप ऑफ टोटम पोल कहा जाता है, या फिर पिरामिड वो नज़र आते हैं अमेरिका में, जो कि एक वेस्टर्न कंट्री है। फिर भी वहाँ पे मॉडर्निटी को अडॉप्ट करने के बजाय भारतीय मूल के लोग अपनी संस्कृति को अडॉप्ट या उनको जो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो फिर भी वो टॉप पे रहते हैं। To take care of their children, fathers often make compromises in their careers to ensure well-being of the young ones. Interesting. Everything about life becomes about pouring into their kids, and look at the types of kids that they're developing. Number 3, trustworthy and friendly. Trust is one thing that Indian parents mostly possess. This factor makes them the best friend of their children, at least till their adulthood. Indian mothers become the best friends their sons, while the daughters love to confine their secrets in their fathers. What? Let me say that one more time. Indian mothers become best friends of their sons, while daughters feel comfortable sharing and confiding their secrets to their fathers. Does that sound American, or is it like, you know what I'm saying? Very interesting, right, when you think about the dynamic here of how this looks. Let's go to number 4, quality time. Indian parents, amidst their busy schedule, give quality time to their children. They spend great time with their wards instead of just letting them grow in their own way. They're involved. They're not letting them go and let society raise their kids. They're very much involved with their kids. Number 5, nurture the talents. When it comes down to Indian parents, they're extremely good at identifying the skills and unique talents of their children. They toil hard to enhance those special gifts that their kids are blessed with. You would often find the Indian kids, teenagers, and young adults getting well acclaimed in a number of creative fields thanks to the dedicated and loving Indian parents. Number 6, inquisitive. That's one quality of Indian parents that many children are annoyed about. Very interesting. However, Indian parents, being curious in nature, keep a careful watch on their kids. Instead of breaching the freedom and privacy of their children, parents stay watchful about their offspring's attitude and behavior to prevent them from venturing into any misleading paths. You know, some of the things you hear parents say, leave your kids alone, let them do whatever they want, you know, they kind of got to go through it. Indian parents will say, you're a fool to do that when they're kids. You got to be involved so they don't go out there and do crazy things. I remember while I'm listening to this, some of it's reminding me, I'm thinking my mom's maybe a little bit Indian. Middle Easterns have similar tendencies, by the way. They're on these lists too. My sister went on her first date. I'm a younger brother by 6 years. She says, your job is to spy on her. You're going to go everywhere she goes. So I'm like, no problem. Yes, sir. You know, it's like, yes, ma'am. So me and the friends, everybody had a job. I'm watching from the top. He's here. Did they kiss? And then boom, they drove. Follow him. I'm a 14, 15-year-old kid. We're trying to follow exactly where this guy's going, watching everything to come back and report. Look at that concept. This kid had to do this with his sister. Some tells me Indian parents maybe do a little bit of that as well. Sisters are watching the same. You were the annoying brother, were you? I was very protective. Power to all the protective brothers out there. We need more of them out there. I'm hoping Tico and Dylan will be the same as well. I'm sure they will be. Okay, culture. Indian parents instill the fundamental culture and religious values into their children right at their childhood. India is a country that has deep-rooted cultural values. Its traditions and legacies are well maintained. Indian parents make it a point to impart the same value to their children. Don't go away from your values and principles. Keep selling it to them. Number 8, religious tolerance. India is a land of diversity with multitude of ethnic races having dissimilar values and ethos. Indian parents infuse the ethics in their children that let them respect people hailing from different religions, castes, creeds, and races. Respect. So it's like, hey, you got to respect everybody that's out there. Makes sense. Number 9. Ready? This one's going to be a little bit confusing for some of you. Judgment
judgmental. Indian parents are highly judgmental. That definitely helps them keeping their children safe from negatives. This is also one of the best qualities of an Indian parent, to implant the same insightful abilities in their successors. And last but not least, number 10, multitasking. Most Indians are hardworking. They are diligent when it comes down to handling their parenting tasks. The moms and dads in India do great multitasking while managing their personal and professional life. They strike a fine balance between their times and dedicate adequate time to both their children and their jobs. All right, so look, you may agree with some of the things, you may not agree with some of the things, but the results is there. It shows you the numbers, what they've done, and there's a lot to be learned from what they're doing. Here's a few different takeaways. Number one, if your kids are going to go to school, don't wing it. Speak to them about what things to be considered then. Get involved in what degrees. I watch how involved Tom is with his kids going and taking degrees. It's amazing seeing parents that are involved and saying, hey, look at this, look at that, let's research this together rather than do whatever you want to do. Number two, superior work ethic. They don't compromise their work ethic. No one's going to make them not work hard, including the 4-hour work week, Business Insider, Bloomberg, HuffPo type of people that are journalists who came out of Columbia, want to convince everybody to do a 4-day work week. Good luck doing that to the Indian community, and you shouldn't let that happen to you either. Number three, they're intentional about what they're doing. They're not winging it. They're saying, hey, here's what we're doing and this is why. This is what we're doing with our kids and here's why. There is intention behind it. Next, vision and discipline. Extremely disciplined in how they're raising their kids based on some of the things that we're reading here. Next, delayed gratification is there, and they're constantly teaching their kids that there's many ways to do that. You know, I can ask my kids sometimes, I'll say, hey, let me ask you a question. Would you rather have me buy you an ice cream right now, but you get no video games for 4 weeks? Or would you rather not have ice cream for a month, but you get 4 video games a month from now? They're sitting there, oh my God, I would much rather not have to do this. I'll wait versus I have this. These are ways to develop the muscle of delayed gratification by you putting them in positions where they have to make the decision themselves. Strong values, and they keep selling the values and principles to their kids, and they don't compromise it. They're not embarrassed by it. They don't let the world or American society make them feel guilty about what they believe in and become softer and more gentle. No, this is what we stand for, kid. Here's who you are. Here's a family you're a part of. This is what we're going to be doing. Now let's figure out your talents and help you go out there and do big things within your life and make us proud, make the family proud, but more importantly, make you an incredible net positive to society. Hey, quick shout out to Indian parents out there. I salute you. I respect you for doing what you're doing. You make the world a safer place by raising kids based on high standards and high values and principles. Thank you for your hard work and dedication. Anyways, if you got value from this video, अब बात ऐसी है कि यहाँ पे जितना कुछ इन्होंने कहा है वो बेसिकली यही दर्शाता है कि किस तरह से जो अमेरिकन सोसाइटी है वो डिफरेंट है भारतीय या एशियन सोसाइटी जनरली कहें तो यहाँ पे कंजर्वेटिव आइडियाज़ और ज़्यादा हावी है और अमेरिका के जो लेफ़्ट लिबरल प्रोग्रेसिव आइडियाज़ है वो बहुत ज़्यादा हावी है। लेकिन तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं आपके सामने ये रखना चाह रहा था। आप अपने विचार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलता है, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।